Hare Krishna. Who led that Aarti, the Puja Kirtan? That was really powerful. I was dancing in my room. Nice Kirtan, really led it. Hidaya Radha Madhava Kunjabi Hidaya Radha Madhava Kunjabi Hidaya Jaya Gopi Janavallabha Giri Bharadhaya Gopi Janavallabha Giri Bharadhaya Giri Bharadhaya Suranandana Gajadanjaya Suranandana Gajadanjaya Jamuna Tira Hevai Jamuna Tira Hevai Jaya Radha Madhava Kunjabi Hidaya Jaya Radha Madhava Kunjabi Hidaya Jaya Gopi Janavallabha Giri Bharadhaya Giri Jaya Gopi Janavallabha Giri Bharadhaya Giri Bharadhaya Suranandana Gajadanjaya Yasodanandana Gajadanjaya Jamuna Tira Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunjabi Hidaya Jaya Radha Madhava Kunjabi Hidaya Hari Hari Bol Srila Prabhupada Hari Nam Sankirtan Srimad Bhagavatam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 9, Chapter 20,
the dynasty of Puru, and so we'll be doing a few verses here, and this is verse number 2. Jananmejayo yabut puro Prachivam stat tataha Parivodham manushur vai Tasmat charu pado bhavat Jananmejayo yabut puro Prachivam stat tataha Parivodham manushur vai Tasmach charu pado bhavat Janmejayo yabut puro Bhavichintat sutas tataha Parivota manushur vayim Tasmacharu pado bhavadam. Janmejayo yabut puro Prachivam stat tataha Parivodham manushur vai Tasmacharu pado bhavat. Ladies? Anyone else? Okay. Janmejaya, King Janmejaya, he indeed Abut appeared, Puro from Puru, Prachinvan, that is Janmejaya's Sutta, son, Tata, from him, Prachinvan, Ravira, Ata, thereafter, Manushu, Parivir's son, Manushu, Vai, indeed, Tasmat, from him, Manushu, Charupada, King Charupada, Abhay appeared.
So we're going to hear a little bit about the different descendants coming down from Puru. King Janmanjaya was born of this dynasty of Puru. Janmanjaya's son was Chinvan, and his son was Pravira. Therefore, Pravira's son was Manushu, and from Manushu came the son named Charu Pada. अनुवाद पुरु के ही नवा स्कंद अध्याय 20 पुरु का वंश श्लोक 2 का अनुवाद। पुरु के ही इस वंश में राजा जन्मेजय उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र प्रचिनवान था और उसका पुत्र था प्रवीर। तत्पश्चात प्रवीर का पुत्र मनुष्य हुआ, जिसका पुत्र चारुपद था। Verse 3. The son of Charupada was Sudyu, and the son of Sudyu was Bhagu Gava. Bhagu's son was Samyati. From Samyati came a son named Ahamyati, and from whom Rudraswa was born. तीसरा श्लोक का अनुवाद। चारुपद का पुत्र सुद्यु था और सुद्यु का पुत्र बहुगव था। बहुगव का पुत्र संयाति था, जिससे अहंयाति नामक पुत्र हुआ, और फिर उससे रौद्राश्व उत्पन्न हुआ। Text 4 and 5. Raudraswa had 10 sons named Retyu, Kaksayu, Standalayu, Kritayuka, Jalayu, Sanateyu, Dharmayu, Satyayu, Rateyu, and Vanayu. Of these 10 sons, Vanayu was the youngest. As the 10 senses, which are products of the universal life, act under the control of life, these 10 sons of Raudraswa acted under Raudraswa's full control. All of them were born of the Apsara named Gritachi. चौथे और पांचवें श्लोक का अनुवाद। रौद्राश्व के 10 पुत्र थे, जिनके नाम ऋतेयु, कक्षेयु, स्तंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, सन्नतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, वृत्तेयु तथा वनेयु थे। इन 10 में वनेयु सबसे छोटा था। ये 10 पुत्र रौद्राश्व के पूर्ण नियंत्रण में उसी प्रकार कार्य करते थे, जिस तरह विश्वात्मा से उत्पन्न 10 इंद्रियां प्राण के नियंत्रण में कार्य करती हैं। ये सभी घृताची नामक अप्सरा से उत्पन्न हुए थे। Text 6. Retyu had a son named Rantinava, who had 3 sons named Sumati, Dhruva, and Apatirata. Apatirata had only one son, whose name was Kanva. छठे श्लोक का अनुवाद। ऋतेयु से रंतिनाव नामक पुत्र हुआ, जिसके 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सुमति, ध्रुव तथा अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के एकमात्र पुत्र का नाम कर्णव था। Text 7. The son of Kanvan was Medatirthi, whose sons, all Brahmanas, were headed by Paskana. The son of Rantinava, named Sumati, had a son named Rabi. Maharaj Dushmanta was well known as the son of Rabi. 7वें श्लोक का अनुवाद। कर्णव का पुत्र मेधातिथि था, जिसके सारे पुत्र ब्राह्मण थे और उनमें प्रमुख प्रस्कन्न था। रंतिनाव का पुत्र सुमति, सुमति का पुत्र रेभी, और रेभी का पुत्र था महाराज दुष्मंत। So now we're going to hear about King Dushmanta in the next few verses. Once when King Dushmanta went to the forest to hunt and was very much fatigued, he approached the residence of Kanvan Muni. There he saw a most beautiful woman who looked exactly like the goddess of fortune, and who sat there illuminating the entire ashram by her effulgence. The king was naturally attracted by her beauty, and therefore he approached her, accompanied by some of his soldiers, and spoke to her. अब हम राजा दुष्मंत के बारे में सुनेंगे। 8वें 9वें श्लोक का अनुवाद। एक बार जब राजा दुष्मंत शिकार करने जंगल गया और अत्यधिक थक गया, तो वह महाराज कर्णव के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी, जो लक्ष्मी जी के समान लग रही थी।
और वहां अपने तेज से सारे आश्रम को प्रकाशित करती हुई बैठी थी। स्वभावतः राजा उसके सौंदर्य से आकृष्ट हो गया, अतः वह अपने कुछ सैनिकों के साथ उसके पास गया और उससे बोला। Verse 10. Seeing the beautiful woman, the king was very much enlivened, and the fatigue of his hunting excursion was relieved. He was, of course, very much attracted because of lusty desires, and thus he inquired from her as follows in a joking mood. श्लोक 10। उस सुंदर स्त्री को देखकर राजा अत्यधिक हर्षित हुआ और शिकार भ्रमण से उत्पन्न उसकी सारी थकावट जाती रही। वह निसंदेह काम इच्छाओं के कारण अत्यधिक आकृष्ट था, अतः उसने हंसी हंसी में उससे इस प्रकार पूछा। King Dusmanta says, "Oh, beautiful lotus-eyed women, who are you? Whose daughter are you? What purpose do you have in this solitary forest? Why are you staying here?" श्लोक 11। राजा दुष्मंत ने उससे कहा, हे सुंदर कमल नयनों वाली, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? इस एकांत वन में तुम्हारा क्या कार्य है? तुम यहाँ क्यों रह रही हो? Continues, "O most beautiful one, it appears to my mind that you must be the daughter of a Kshatriya. Because I belong to the Puru dynasty, my mind never endeavors to enjoy anything irreligiously." श्लोक 12 में राजा दुष्मंत आगे कहते हैं, हे अतीव सुंदरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो। चूंकि मैं पुरुवंशी हूँ, अतः मेरा मन कभी भी अधार्मिक रीति से किसी वस्तु का भोग करने की चेष्टा नहीं करता। Maharaj, so purport here, Maharaj Dushmanta indirectly expressed his desire to marry Sankuntala, for she appeared to his mind to be a daughter of some Kshatriya king. तात्पर्य, महाराज दुष्मंत ने अप्रत्यक्ष रूप से शकुंतला से विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उसे लगा कि शकुंतला किसी क्षत्रिय राजा की पुत्री है। Verse 13, Sakuntala said, "I am the daughter of Vishwamitra. My mother Menaka left me in the forest. O hero, the most powerful saint Kanvanmuni knows all about this. Now let me know, how may I serve you?" श्लोक 13 में शकुंतला कहती है, शकुंतला ने कहा, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरी माता मेनका ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। हे वीर, अत्यंत शक्तिशाली संत कण्व मुनि इसके विषय में सब कुछ जानते हैं। अब आप कहिए कि मैं आपकी किस तरह सेवा करूं। Report. Sakuntala informed Maharaj Dusmanta that although she never saw her father, never saw or knew her father or mother, Kanvanmuni knew everything about her, and she had heard from him that she was the daughter of Vishwamitra, and that her mother was Menaka, who had left her in the forest. तात्पर्य, शकुंतला ने महाराज दुष्मंत को बतलाया कि यद्यपि उसने अपने पिता या माता को न तो कभी देखा है, न उनके विषय में वह कुछ जानती है, लेकिन कण्व मुनि उसके विषय में पूरी तरह जानते हैं। उसने उन्हीं से जाना है कि वह विश्वामित्र की पुत्री है और मेनका उसकी माता है, जिसने उसे जंगल में छोड़ दिया था। Sakuntala continues, verse 14. O king, with eyes like the petals of the lotus, kindly sit down and accept whatever reception we can offer. We have a supply of nirvara rice that you may kindly take, and if you desire, stay here without hesitation. 14वें श्लोक का अनुवाद। शकुंतला आगे कहती है, हे कमल जैसे नेत्रों वाले राजा, कृपया बैठ जाएं और हमारे यथासंभव आतिथ्य को स्वीकार करें। हमारे पास नीवार चावल है जिन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो बिना किसी हिचक के यहाँ रुक सकते हैं। Verse number 15. King Dusmanta replied, "O Sakuntala, with beautiful eyebrows, you have taken your birth in the family of the great saint Vishwamitra, and your reception is quite worthy of your family. Aside from this, the daughters of a king generally select their own husbands." 15वें श्लोक का अनुवाद। राजा दुष्मंत ने उत्तर दिया, हे सुंदर बाहों वाली शकुंतला, तुमने महर्षि विश्वामित्र के कुल में जन्म लिया है और तुम्हारा आतिथ्य
तुम्हारे कुल के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त राजा की कन्याएं सामान्यतः अपना वर स्वयं चुनती हैं। Srila Prabhupada's purport. In her reception of Maharaj Dusmanta, Sakunta clearly said, "Your Majesty may stay here, and you may accept what reception I can offer." Thus, she indicated she wanted Maharaj Dusmanta as her husband. As far as Maharaj Dusmanta was concerned, he desired Sakuntala as his wife from the very beginning, as soon as he saw her. So the agreement to unite as husband and wife was natural. To induce Sakuntala to accept the marriage, Maharaj Dusmanta reminded her that the daughter of a king could select her own husband in an open assembly. In the history of Aryan civilization, there have been many instances. Jai Shri Shri Radha Madan Mohan Gauritai Krishna Balaram Jagannath Baladev Subhadra Maharani Palanda Srinadev Srila Prabhupada Ki Jai. To induce Sakuntala to accept the marriage, Maharaj Dusmanta reminded her that as the daughter of a king, she could select a whole husband in an open assembly. In the history of Aryan civilization, there have been many instances in which famous princesses have selected their husbands in open competitions. For example, it was such a competition that Sita Devi accepted Lord Ramachandra as her husband, and that Draupadi accepted Arjuna, and there are many other instances. So marriage by agreement or by selecting one's own husband is in open competition allowed. Is in open competition still allowed? There are 8 kinds of marriage, of which marriage by agreement is called Gandharva marriage. Generally, the parents select a husband and wife for their daughter or son, but Gandharva marriage takes place by personal selection. Still, although marriage by personal selection or by agreement took place in the past, we find no such thing as divorce by disagreement. Of course, divorce by disagreement took place among low-class men, but marriage by agreement was found even in the very highest classes, especially in the royal Kshatriya family. Maharaj Dusmanta acceptance of Sakuntala as his wife was sanctioned by Vedic culture. How the marriage took place is described in the next verse. 15वें श्लोक का तात्पर्य। महाराज दुष्मंत का स्वागत करते हुए शकुंतला ने स्पष्ट कहा, आप यहाँ रुक सकते हैं और हमारा यथासंभव आतिथ्य ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह उसने इंगित कर दिया कि वह महाराज दुष्मंत को पति रूप में चाहती है। जहाँ तक दुष्मंत की बात थी, वह तो प्रारंभ से ही, जब से उसने देखा था, शकुंतला को पत्नी के रूप में चाह रहा था। अतः पति पत्नी के रूप में मिलने की स्वीकृति स्वाभाविक थी। शकुंतला को विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही महाराज दुष्मंत ने उसे स्मरण कराया कि राजकन्या के नाते उसे अपना वर खुली सभा में चुनना चाहिए। स्वयंवर। आर्य सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें सुप्रसिद्ध राजकुमारियों ने स्वयंवर द्वारा पति का चुनाव किया है। उदाहरणार्थ, सीता देवी ने रामचंद्र जी को ऐसी ही प्रतियोगिता में पति रूप में चुना और द्रौपदी ने अर्जुन को चुना था। ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं। अतएव सहमति से या खुली प्रतियोगिता में अपना वर चुनने की छूट थी। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह करना गांधर्व विवाह कहलाता है। सामान्यतया माता पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए वर कन्या का चुनाव करते हैं, परंतु गंधर्व विवाह स्वयंवर से होता है। यद्यपि भूतकाल में स्वयंवर द्वारा या सहमति से विवाह होते थे, किंतु विवाह विच्छेद जैसी वस्तु नहीं पाई जाती थी। निस्संदेह निम्न जातियों में असहमति होने पर विवाह विच्छेद होता था, किंतु सहमति से विवाह की प्रथा उच्चतम जातियों में भी थी
और राजसी क्षत्रिय परिवारों में यह विशेष रूप से प्रचलित थी। महाराज दुष्मंत द्वारा शकुंतला को पत्नी रूप में ग्रहण करना वैदिक संस्कृति के अनुरूप था। यह विवाह जिस रूप में हुआ उसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So from here practically to the rest of the chapter you'll hear more about King Dusmanta and Sakuntala and the birth of a very powerful son who ruled the entire planet, King Bharat. तो आगे के श्लोकों में हम सुनेंगे कि महाराज दुष्मंत और शकुंतला के बारे में और उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई उसने व्यवहारिक रूप से पूरे दुनिया पे शासन किया। The story of King Dushmanta and Sakuntala is known throughout India practically. Everywhere there's been books written about it. Very romantic. राजा दुष्मंत और शकुंतला की जो कहानी है भारत में सब कोई जानता है, एक किताब लिखी गई है, बहुत ही रोमांटिक है। And we get a little indication here. She was the daughter of Vishwamitra Muni. When Vishwamitra Muni was tempted by Medika, the one who was performing his very severe austerities, and she broke his austerities. He became attracted. Marriage took place, and Sakuntala was the product of the marriage. तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो विश्वामित्र की पुत्री थी और विश्वामित्र मुनि गहरी तपस्या में मग्न थे और फिर मेघा द्वारा उनको उत्तेजित किया गया और फिर उसके माध्यम से शकुंतला का जन्म हुआ। And so here it's mentioned that this selection of one's husband by princesses, those who are daughters of Kshatriyas, is common and still takes place. यहाँ बताया है कि क्षत्रियों की पुत्रियों के द्वारा जो अपना पति स्वयं चुना जाता है, ये आम बात है और आज भी ऐसा कथा विद्यमान है। We see in the Shastras the different types of ways that people come together as husband and wife. शास्त्रों में देखते हैं कि अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि लोग पति पत्नी स्त्री पुरुष साथ में आते हैं और फिर शादी करते हैं। King Vishwaka wanted his daughter I'll get it. Rohini, was it Rohini? Not Rohini, but Rukmini. King Vishwaka wanted Rukmini to marry Krishna, and she also wanted to marry Krishna. इस तरह रुक्मिणी देवी थी, वो कृष्ण से शादी करना चाहती थी। But as a king, he was forced to set up a competition to see who could be the person who she would choose in the competition. तो राजा, उनके जो पिता थे, उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया कि इसमें सभी राजा आए और किसको रुक्मिणी चुनेंगी अपने पति के रूप में, उनके ऊपर निर्णय। So, was it Shalva? I think it was. Yeah. Shalva brought his armies, and he was friends with Rukmini, the brother of Rukmini,
And so Rukmi promised Shalva that his daughter would be his wife. His sister would be his wife. Yeah. तो शाल्व जो है वो अपनी सेना को लेकर आए और शाल्व जो है वो रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बहुत अच्छे मित्र थे। तो रुक्मी ने वादा किया था कि मेरी बहन की शादी आपसे ही करेंगे शाल्व से। It's an interesting situation. Father wanted Krishna, the daughter wanted Krishna, the brother wanted Shalva. तो स्थिति कुछ ऐसे रोचक हो गई कि जो राजा हैं वो चाहते हैं कृष्ण को, रुक्मिणी जी भी कृष्ण को ही चाहती हैं पति रूप में, और रुक्मी चाहता है कि शाल्व जो है मेरी बहन का पति बने। Poor girl. She had to be put in the middle of so many choices. अबला नारी कई चुनावों के बीच में फंस गई। She sent a letter, Krishna, save me. She sent it to one Brahmana. And she didn't hear anything from the response of the letter. And it was time for the marriage ceremony to take place, the selection of the bride. तो रुक्मिणी ने पत्र भेजा कृष्ण को एक ब्राह्मण के माध्यम से, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया और शादी का समय आ गया कि जब स्वयंवर होने वाला था। And there were other kings there. Jarasandha was also there. और भी राजा थे इस प्रतियोगिता में, जरासंध भी था। Some of the best kings, they all aspired for Rukmini. तो बहुत सारे राजा थे, सभी रुक्मिणी को चाहते थे अपनी रूप में। And Krishna arrived just right at the last minute. कृष्ण बिल्कुल आखिरी समय पे आ गए। And he brought his armies headed by Balaram. और अपनी सेना लेकर आए जिसका नेतृत्व बलराम कर रहे थे। And before any ceremony could take place, he kidnapped her. और इससे पहले कि कुछ आयोजन वगैरह शुरू होता, उसको रुक्मिणी को अपहरण कर लिया। And as soon as he did that, all the other Kshatriyas jumped on their horses and started to attack Krishna. जैसे ही रुक्मिणी का अपहरण कृष्ण ने किया तो बाकी सब राजा अपने घोड़ों पे चढ़ गए और कृष्ण पे आक्रमण करने लगे। So marriage in those days was quite serious. तो उन दिनों शादी का मामला बड़ा गंभीर रहता था। Few thousand people would have to die. कुछ हजार लोगों तो मरना पड़ता था शादी के पहले। That's the engagement ceremony. Turns into a massacre. तो ये है मतलब सगाई की जो समारोह था। So Balaram was there to assist Krishna, and they fought these powerful kings, and Krishna captured Rukmini and took her away. Krishna never loses. तो बलराम जी जो है कृष्ण की तरफ से युद्ध कर रहे थे और कृष्ण जो है रुक्मिणी को बिठा के और फिर अपने रास्ते पे निकल गए, क्योंकि कृष्ण की कभी पराजय नहीं होती है। So we hear how marriages take place in Vedic culture. तो हम सुनते हैं कि वैदिक संस्कृति में कैसे विवाह होता है। Now it's many times it's by arrangement by the parents, according to gotra, according to economic position. एक तो विवाह की विधि है, माता पिता जो है गोत्र के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी पुत्री या पुत्र के लिए इस तरह चुनते हैं। If the girl was coming from a rich family, she would generally, her parents would arrange for someone also who's coming from a rich family to be the husband. यदि लड़की अमीर परिवार से है तो माता पिता साधारणतः यही चाहते हैं कि जो हमारा दामाद हो वो भी अमीर परिवार से। But that was the general principle. Everyone followed the gotra. The economic situation was given. Astrological charts were done to see compatibility. तो ये सामान्य सिद्धांत था, गोत्र का विचार करना, आर्थिक स्थिति का विचार करना, साथ में कुंडली को मिलाया जाता था कि तुलना की जा सके। But on the spiritual platform, none of that applies. लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे इनमें से कोई भी चीज लागू नहीं होती है। We have Kardama and Devahuti. कर्दम और देवहूति का हम देखिए विचार करें। She was the daughter. She was a Kshatriya. She was the daughter of Swayambhuva Manu. तो स्वयंभू मनु की पुत्री थी देवहूति, King of the universe. जो कि पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, क्षत्रिय थे। And Kardama Muni was a sadhu living in a hut doing austerity.
कर्दम मुनि थे, एक साधु, झोपड़ी में रहते थे, तपस्या में लगे थे। But he wanted a wife for some reason. Doesn't explain why, but he wanted a wife. लेकिन कर्दम मुनि को चाहते थे कि एक पत्नी हो। ऐसा नहीं समझा कि क्यों चाहते थे, लेकिन चाहते Of थे। course, we found out later what was the reason, but at that time it seemed mysterious why this completely renounced sadhu wanted to enter into grihastha life. ये आगे बताया गया है कि क्यों चाहते थे, लेकिन उस समय एकदम आश्चर्य लगा कि एकदम वैरागी साधु क्यों पत्नी चाहते हैं। So, by the arrangement of Lord Brahma, who is superior, who is the father of Swayambhuva Manu, the arrangement took place. तो ब्रह्मा जी ने आयोजन किया, जो स्वयंभू मनु के पिता थे। And Sarupa, her name was Sarupa. Is that correct? Anybody know? Shantarupa. Yeah, she agreed because her parents, Lord Brahma, wanted the marriage. तो शत्रुपा, जो स्वयंभू मनु की जो पत्नी थी, वो भी इस पे सहमत हो गई और जो देवहूति है उसकी शादी फिर कर्दम मुनि से हुई। She was very wealthy and now she had to live with nothing. देवहूति पहले तो बहुत ही अमीर परिवार से थी, लेकिन अभी कर्दम मुनि शादी हुई तो कुछ भी नहीं है। And she's an obedient wife, लेकिन बहुत आज्ञाकारी पत्नी है, obedient daughter, आज्ञाकारी पुत्री भी है, and coming from a very prestigious religious and highly, high quality royal family. बहुत ही प्रतिष्ठित धार्मिक अमीर परिवार से आई है। From her own perspective, she could have selected, anyone. यदि उसकी दृष्टि से विचार करें तो किसी को भी अपने पति के रूप में चुन सकती थी। It wouldn't have been hard for her to find the husband of her choice. उसके लिए कोई कठिन नहीं था देवहूति के लिए अपनी पसंद का वर चुनना। But she listened to her parents. लेकिन उसने अपने माता पिता की बात सुनी And she agreed to the marriage. और कर्दम मुनि से शादी करने को राजी हो गई। But he couldn't give her anything. लेकिन कर्दम मुनि कुछ भी दे नहीं पाए उसको। And she, and understanding that as a wife, she should follow her husband, he was performing austerities, so she also performed austerities. तो साधारण समझ यही है कि पत्नी को पति को फॉलो करना चाहिए। तो चूंकि कर्दम मुनि तपस्या में लगे थे, तो देवहूति भी तपस्या में लगी हुई थी। And growing up in the royal family, she was always surrounded by opulence and very luxurious comforts. She gave that all up just to serve her husband. पहले की बात करें, राष्ट्रीय परिवार में जन्म हुआ था तो हमेशा सखियों से घिरी रहती थी और ऐश्वर्य में घिरी रही थी, लेकिन अभी सब कुछ छोड़ के अपने पति का अनुसरण कर रही। Not used to performing austerities, she became very, very thin. लेकिन तपस्या करने की चूंकि उसको आदत नहीं थी, तो बहुत दुबली पतली हो गई। She became so thin, she looked like she was about to disappear. इतनी कृशकाय हो गई, दुबली पतली हो गई, ऐसा लगा कि बस अभी गायब हो जाएगी। But Kardama Muni could understand. She's so faithful, she's so chaste, she's such a great wife, serving in any condition, that he decided to use his mystic power to reward her. कर्दम मुनि ने फिर विचार किया कि ये इतनी विश्वास पात्र है, इतनी पतिव्रता पत्नी है कि सभी तरह से सेवा में लगी हुई है, तो उन्होंने सोचा कि इस स्थिति को कुछ सुधारा जाए, अपनी यौगिक शक्ति का उपयोग किया। He was a powerful yogi. बड़े शक्तिशाली योगी थे। He created an aerial mansion that was the size of a city. उन्होंने एक ऐसे विमान का निर्माण किया, उसमें महल था कि जो कि एक शहर के आकार का था। And had all the natural and beautiful arrangements of a beautiful city. सारे उसमें आयोजन थे, बहुत सुंदर अद्भुत प्राकृतिक आयोजन थे, एक जो शहर में होने चाहिए। And it could fly anywhere. और वो कहीं भी पूरा शहर का शहर उड़ सकता था। So he offered that as a gift to his wife, and he took her on a trip, flying everywhere in the mansion. तो उस जो शहर के रूप का जो हवाई जहाज था, उसमें बैठ के उसको पत्नी को उपहार में दिया और दोनों उसमें बैठ के वर्ल्ड टूर पे गए।
Very nice honeymoon. बहुत अच्छा हनीमून हुआ। And, she accepted. She didn't ask for it, but he wanted to give her because he saw that she was so dedicated and so faithful. He wanted to reward her for her chastity. तो देवहूति ने तो ऐसा मांगा नहीं कि ऐसा मुझे जाना है, लेकिन कर्दम मुनि चाहते थे कि उसकी पतिव्रता, जो इतना पतिव्रता है, उसके लिए कुछ उसको पुरस्कार दिया जाए, कुछ दिया जाए। And to please her even further, he gave her 9 daughters. और देवहूति की प्रसन्नता के लिए कर्दम मुनि ने देवहूति को 9 पुत्रियां प्रदान की। And later on, 1 son, of course. That son was the Supreme Personality of Godhead, Lord Kapila Dev. और बाद में एक पुत्र भी, हाँ, वो पुत्र जो थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, भगवान कपिल देव। So we see from this, and because she got the son, Lord Kapila Dev, he stayed with his mother after his father left, and he taught her the entire science of pure devotional service. तो जो कपिल देव जब पुत्र प्राप्त हुए, तो उसके बाद कर्दम मुनि जो है चले गए, लेकिन कपिल देव माँ के साथ रहे और भक्ति में जो विज्ञान है उसकी शिक्षा देवहूति को प्रदान की, which qualified her to become perfect and go back to the spiritual world. इसके कारण देवहूति को पूर्णता प्राप्त हुई और वो आध्यात्मिक जगत जा पाई। So the chastity of a woman is the strength of a woman. Is her power. A woman's power is in her chastity. तो स्त्री की जो शक्ति है वो है उसके पतिव्रता होना। That means marriage is only for once. इसका मतलब शादी जो है जिंदगी में एक बार का ही मामला है। Prabhupada mentions here, of course, there was no question of divorce. इसका मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि विवाह विच्छेद जैसी कोई वस्तु पाई नहीं जाती वैदिक संस्कृति में। This idea of divorce is quite new. ये जो विवाह विच्छेद या तलाक का ये जो विचार है, ये अभी नया नया हुआ है। I remember when I was growing up in the 1950s, still a young boy, 1960s, we didn't know anybody. We didn't have anybody in our school whose parents were divorced. महाराज अपना व्यक्तिगत उदाहरण बता रहे हैं कि जब 1950 में या 1960 में स्कूल में जब थे, तब ऐसे कोई भी साथ में सहपाठी नहीं था कि जिसके माता पिता का तलाक हुआ हो। So even 70 years ago, in Western countries, divorce was not even common then. तो 70 साल पहले भी विदेशी देशों में भी इस तरह विवाह विच्छेद नहीं हुआ करता था। And if anybody got divorced, they were considered to be an outcast. और यदि किसी का इस तरह विवाह विच्छेद हो जाए, ऐसा माना जाता था कि वो लोग अशुद्ध हैं या बहुत गए गुजरे। But then society evolved or devolved, we're not sure. लेकिन उसके बाद समाज का एक तरह से विकास हुआ या पतन हुआ, कह नहीं सकते। So about 15-20 years ago, the statistics in America were that 70% of the marriages end in divorce in the first 3 years. तो 15-20 साल पहले की आंकड़े बताएं तो अमेरिका में 75% जो शादियां हैं, शादी के पहले 3 साल में ही उनका तलाक हो जाता है। We made it 5% more. 70%. 70%. It's already high. It's high enough, you know. We're trying to lower it. So, but now the divorce rate is much lower. लेकिन उस समय 70% थी, लेकिन अभी वो धीमी हो गई। Why? It's because people don't get married. अभी क्यों नीचे गिर गई? क्योंकि अभी लोग शादी नहीं करते हैं, तो तलाक कैसे होगा? They just live together. साथ में रहते हैं। Will you become my partner? Okay, let's try it out. तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रह के पहले देखते हैं कैसा रहता है। People live together. They don't want to go through the legal procedure of getting married because they know things may break up, so they can avoid all the legal hassles. तो आजकल ये स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं
बिना शादी के, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें शादी में फिर कानूनी गतिविधियां रहेंगी, फिर बाद में तलाक लेना पड़ेगा, तो फिर कानून के फिर पास जाना पड़ेगा, तो उन सबसे बचो। And right now in the world, even amongst the devotee communities, nobody's getting married anymore. और अभी की जो बात करें तो अभी संसार में यहाँ भक्त समुदाय की बात करें तो उसमें भी ऐसा हो रहा है कि कोई शादी नहीं कर रहे हैं। My disciples, they come to me, my daughter, she's like 35, she still can't find a husband. जैसे मेरे शिष्य मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मेरी पुत्री की 35 साल की उम्र है, लेकिन हम उसके लिए पति नहीं ढूंढ पा रहे हैं। Girls don't want to, they're choosing their husbands, and the guys don't want to get married anymore. और right in your, you in from UK, UK is really a big problem. Nobody wants to get married because they don't know what's going to happen. तो यूके में बड़ी समस्या है, कोई भी शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि आगे पता नहीं आगे क्या होगा। And they always come to me to solve the problem. और वो मेरे पास आते हैं कि आप समस्या का हल बताइए। They think I'm the marriage counselor. Yeah. वो सोचते हैं कि मैं जो है मैरिज काउंसलर हूँ। I told them my name is Candramauli, not Vanamali. मैंने कहा कि मेरा नाम है चंद्रमौली, नॉट वनमौली। Vanamali was the matchmaker for Lord Chaitanya's marriage. क्योंकि वनमाली जो है वो चैतन्य महाप्रभु की शादी में उन्होंने ही योगदान दिया था। So the ladies, they come to me with problems. Please find somebody for my daughter. तो जो माताएं हैं मेरे पास आती हैं, कहती हैं कि कृपया मेरी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ के दीजिए। So one day I was in Mayapur. I was walking down the stairs of the Gada building. तो एक बार मैं मायापुर में था और गदा भवन की सीढ़ियों से उतर रहा था। And one lady come running up to me. और एक जो है स्त्री मेरे पास दौड़ती हुई आई। And she's speaking the local language. और स्थानीय भाषा बोल रही थी। I don't know what she's saying. पता नहीं क्या बोल रही थी, समझ में नहीं। She's all excited. बहुत उत्साहित थी। So I thought I'd try to find out what she wants. So I saw some boys walking. So I called one young boy over. Oh, what is she saying? तो मैंने सोचा कि समझें तो सही क्या बोल रही है। तो एक वहीं से एक लड़के को बुलाया जो वहाँ का था, उससे पूछा कि क्या बोल रही है। He said, I don't know. She's speaking Marathi. तो उस लड़के ने कहा मैं भी नहीं जानता हूँ, ये तो मराठी में बोल रही है। I'm Bengali. और मैं तो बंगाली हूँ। All right, so I looked around to see if I can see anybody who looked like Marathi. तो मैंने आसपास देखा कोई दिख रहा है क्या मराठी की जैसा। So I found another young man walking by. Said, "Come." तो एक और वहां पे दिखा युवा, तो मैंने उसको बुलाया कि चलो तुम आ जाओ। So I asked him, "You understand Marathi?" He said, "Yeah." तो मैंने पूछा मराठी समझते हो? बोले हाँ समझता हूँ। So what is she saying to me? तो उन्होंने पूछा क्या बोल रही है बताओ। So she spoke to him. तो उस स्त्री ने उनको बताया। She said she has a daughter and she wants you to find a husband for her. तो उन्होंने कहा कि महाराज जी इनकी एक पुत्री है और चाहती है कि आप उसके लिए पति ढूंढ दें। So I wanted to make her happy. So I pointed to one of the boys that I pulled over. They would both stare. I said, and then I got away real quick. तो मैं चाहता नहीं था उसको भी निराश करना, तो वो एक लड़के को मैंने वहीं से खींचा और उसके सामने किया कि देखो इसको थोड़ा समझ लो, और मैं फिर वहां से निकल गया। I don't know what happened after that. I don't know what happened after that. I left really fast. उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उनके बीच, मुझे नहीं पता। So it happens to me all the time. Ladies come up to me, save my daughter. I have to save myself first. तो ऐसा मेरे साथ कई बार हो जाता है, स्त्रियां आती हैं बोलती हैं मेरी बेटी को बचाओ, पहले मुझे खुद को बचाना है। So this Kali Yuga, marriage is really a problem. तो ये कलयुग का समय है, शादी बड़ी समस्या वाली बात है।
the girls don't trust the boys and the boys don't want to get married. Yeah. स्त्री जो है पुरुष पे विश्वास नहीं करती और पुरुष शादी नहीं करना चाहते हैं. A woman is looking for three things. A man is looking for one thing. स्त्री जो है पुरुष में तीन चीजें चाहती हैं और पुरुष एक चीज. And of course, she's looking according to her needs. क्योंकि स्त्री की वो आवश्यकताएं हैं. A woman is looking for protection, financial security, and affection. She wants those three. Correct? स्त्री चाहती है No? Yes? No? सुरक्षा और आर्थिक रूप से सक्षमता और साथ में स्नेह. She wants a husband for protection, for security. He's got to have some money. And also someone who will give her affection. वैसे चाहती है कि उसका पति उसकी सुरक्षा करे, साथ में धन भी प्रदान करे और प्रेम भी करे. Now the boys, they're looking for the goddess of fortune. अब पुरुषों की बात करें तो वो सोचते हैं कि हमारी पत्नी लक्ष्मी जैसी हो. If she would just leave Narayan and come to me, then I could find a wife. लक्ष्मी ऐसी कि नारायण को छोड़ के वो मतलब लक्ष्मी जी मेरे पास आ जाएं और ऐसी पत्नी मुझे प्राप्त हो जाए. So the men want some beautiful woman floating on a swan airplane to come into their life, and then I'll get married. Otherwise, forget it. तो पति चाहता है, पुरुष चाहता है कि ऐसी कोई स्त्री आए, आसमान से अप्सरा की तरह उतरती हुई आए और मेरे सामने आए और फिर मैं उससे शादी कर लूं. So that's the problem. तो यही समस्या है. So it's a big problem nowadays, trying to connect boys and girls together. Very difficult. तो आजकल बड़ी समस्या है कि लड़का लड़की को आपस में जोड़ दिया जाए. At least in Iskcon. I don't know about outside of Iskcon, but in Iskcon it's so difficult. कम से कम इस्कॉन में तो ऐसा ही है. बाहर की नहीं जानते, लेकिन इस्कॉन में तो ये बड़ी समस्या है. But therefore training is required. इसलिए ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की आवश्यकता है. Parents are meant to train the girl, and the boys should also be trained in taking responsibility in life, because when you get married, it is a very important responsibility. माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी बेटियों को शिक्षा दें और साथ में बेटों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए कि ये शादी जो है एक बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण मामला है. And we say there's no question of the divorce. और हमारा सिद्धांत ये है कि विवाह विच्छेद जैसा कोई प्रश्न ही नहीं है. Even if there's some difficulties, some disagreement, the principle of Krishna consciousness, when applied to every situation, can somehow find a solution which could bring back the ideal situation. यदि कुछ समस्याएं भी हैं पति पत्नी के बीच में, लेकिन कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत इस तरह हैं कि जब हम उनको उपयोग में लाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से हम उस समस्या का समाधान पा सकते हैं. When you have a problem, you can't solve the problem on the same level the problem was created. जब आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, जिस स्तर पे, जिस चेतना पे वो समस्या प्रकट हुई है, उसी स्तर पे उसका समाधान नहीं मिलेगा. You have to go to another level, higher level of understanding before you can get the information you need, which is, when applied, can help you solve the problem. And that is spiritual knowledge. तो आपको समझ के या चेतना के उच्च स्तर पे आना पड़ेगा ताकि आपको वहां पे वो ज्ञान मिल पाए. जब उस ज्ञान का आप उपयोग करें तो आप उस समस्या का समाधान पा सकें, और वो जो है ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान. So Prabhupada never approved of divorce. तो श्रील प्रभुपाद ने कभी भी तलाक या विवाह विच्छेद का समर्थन नहीं किया. When Prabhupada started Iskcon, there was nobody who was qualified to perform marriages. जब प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापित किया तो उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शादी करवाने के योग्य हो. We didn't have the yagya priests at those days, to do the yagyas to perform the marriage. So Srila Prabhupada did the yagyas and performed the marriage himself.
उस समय यज्ञ पुरोहित पंडित नहीं थे जो शादी करवा सके, तो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं ही पुरोहित बनके यज्ञ करवाए। And he did it for 3 years. He was marrying his disciples. 3 साल तक प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की शादी करवा रहे थे। After 3 years, he stopped. 3 साल के बाद उन्होंने फिर ये यज्ञ विधि उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया। And he spoke. He said, "You're not taking this marriage seriously, so I'm not going to perform these marriages anymore." He stopped because he saw the devotees were not taking the relationships within the Krishna conscious context. तो 3 साल फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, चूंकि आप लोग शादी के इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं और ज्यादा यज्ञ और ज्यादा शादियां नहीं करवाना चाहता हूँ। क्यों श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि ये जो शिष्य हैं, समझा कि ये कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में इस संबंध को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। When Prabhupada was there, everybody wanted to, the men really didn't want to get married. जब प्रभुपाद जी उस समय वहां थे, तो जो पुरुष हैं वो शादी करने की उनमें रुचि नहीं थी। They were enjoying Krishna consciousness. They were fired up. They were preaching, Kirtan, and it was very hard for the ladies to find husbands. भक्त लोग जो थे वो कृष्ण भावनामृत के आनंद में थे, प्रचार कर रहे थे और सेवाओं में लगे थे, तो उनकी कोई रुचि नहीं थी विवाह में, और जो शिष्याएं थी उनके लिए मुश्किल था पति को ढूंढना। So I was in New Vrindavan. तो मैं न्यू वृंदावन में था। And we had the same problem. वहां भी यही समस्या। None of the men wanted to get married. कोई पुरुष शादी नहीं करना चाहते हैं। And the ladies were unhappy. और जो स्त्रियां हैं वो नाखुश हैं। What to do? क्या करें? So our program was that when we would serve out Mahaprasadam, we'd serve it only in the morning for breakfast, and throughout the day, no one could get prasadam except at lunch and in the evening, but no Maha. Maha was only in the morning. तो उस समय हम लोग जो महाप्रसाद है वो केवल सुबह सुबह ही बांटा जाता था ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और दिन में लंच और डिनर तो होता था, लेकिन महाप्रसाद नहीं बांटा जाता था, सिर्फ सुबह महाप्रसाद मिलेगा। And you'd only get a little bit of Maha because there were so many devotees. बहुत सारे भक्त थे तो थोड़ा ही महा मिल पाता था। And the rest of the prasadam was really austere. और बाकी जो प्रसाद था नॉर्मल, वो तो बड़ा ही तपस्या ही थी उसको खाना। Lunch was chapatis with no ghee and no salt. लंच में चपाती मिलेगी, घी नहीं, नमक भी नहीं। Rice, no salt. राइस में कोई नमक नहीं। And we had something called dal, but it wasn't dal, it was pea bean soup. It was soup, it was pea bean soup. तो दाल जो थी, कहने को तो दाल थी, लेकिन एक सूप थी बस। And that was lunch, that was it. बस इतना ही था, कुछ नहीं इसके अलावा। And in the evening you get milk and popcorn, that's all. और रात को शाम को क्या मिलेगा? दूध और पॉपकॉर्न। So everyone wanted the Maha. सबको फिर महा ही चाहिए था। So we would keep the Maha locked up in a cabinet with a big lock on it. तो महाप्रसाद को रखते थे अंदर केबिन में रखते थे, बड़ा ताला बाहर लगा रहता था। And so the devotees would try to break the lock and steal the Maha. तो भक्त लोग थोड़े ताले को तोड़ने का प्रयास करते थे कि महाप्रसाद निकाल लें। So we got a bigger lock. तो बड़ा ताला लगा दिया गया। But it kept going on. They would break the door and steal the Maha, and then the next morning, there wasn't enough Maha for everybody. Everybody else would get angry. Who's stealing the Maha? लेकिन ये चलता ही रहा, भक्त लोग उसको तोड़ देते, महाप्रसाद निकाल लेते। अगले दिन सुबह भक्त लोग परेशान कि हमको नहीं मिला महाप्रसाद। So the leader of the community made a punishment for anyone who got caught stealing Maha. The leader of the community gave a punishment to anyone who was caught stealing Maha. हाँ, तो कोई भी, तो उस जो वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने जो है सजा देना शुरू कर दिया। यदि किसी को पकड़ा गया महाप्रसाद चोरी करते हुए, सजा मिलेगी उसको। And the punishment is you had to get married. और सजा क्या है कि शादी करनी पड़ेगी। The ladies were really happy.
तो ये सुन के वहां की जो स्त्रियां थी वो खुश हो गई। So every week there was a marriage. तो हर हफ्ते एक शादी हो रही थी। And so this was taking care of the unwed mother's problem. तो इस तरह से जो माताएं जो हैं जो अपनी पुत्री को लिए चिंतित थी उनकी भी देखभाल हो रही थी, उनकी भी शादी हो रही थी। But that didn't stop the stealing of the maha because they thought it's worth a try. So we were making bigger cabinets with more restrictions, and finally we made a cabinet with nails on the inside. That if you, because people were pulling the door open from the outside of the cabinet and putting their hand in and catching the maha and bringing it out. And so we put nails in the inside, so it was like agasora inside. Agasora. हाँ, तो इससे भी लेकिन महाप्रसाद की चोरी नहीं रुकी। लोग सोचे चलो ये भी ट्राई कर लेंगे शादी करके भी। तो फिर इसके बाद हमने एक और तरीका अपनाया कि बाहर तो ताला लगा ही दिया, लेकिन अंदर जो है कीलें भी लगा दी, ताकि कोई अंदर हाथ डालेगा तो उसको कीलें की चुभेंगी। So every week somebody got caught stealing maha and there was another marriage. तो हर हफ्ते कोई ना कोई पकड़ा जाता और फिर उसकी शादी हो जाती। And so we were thinking that's not stopping the maha stealing. We have to do something. So we got a refrigerator, a big refrigerator, and we put all the maha in the refrigerator and put a big lock on the refrigerator. तो इससे भी महाप्रसाद की चोरी रुक नहीं रही थी, तो हमने कहा कि एक रेफ्रिजरेटर ले आते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर महाप्रसाद को रखा गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। And they broke that lock too. और वो ताला भी तोड़ दिया गया भक्तों के द्वारा। So then we took a refrigerator and we took these big chains and wrapped it around the refrigerator door with a big lock. तो फिर हम ऐसा एक रेफ्रिजरेटर लेकर आए और जंजीरों से उसको चारों तरफ से बांध दिया गया और बड़ा ताला लगाया गया। Maha was really, really rare, and people really wanted it because the rest of the prasadam was so austere. ऐसा क्यों? क्योंकि महाप्रसाद उस समय इतना इतना दुर्लभ था, क्योंकि बाकी प्रसाद तो तपस्या ही था, तो लोग चाहते थे महा तो चाहिए ही चाहिए। So one day we woke up and the refrigerator was gone. तो एक दिन हम सुबह उठे, देखा कि फ्रिज ही गायब हो गया है। In the middle of the night, some devotees got together and took the refrigerator, brought it into the woods, and took dynamite and blew open the door. Really? रात को कुछ serious. This is not lying. रात को कुछ भक्त फ्रिज को उठा के ले गए और फिर डायनामाइट लगाया ताकि फ्रिज जो है टूट जाए और महाप्रसाद प्राप्त हो। Because we did a lot of construction, so we were blowing mountains up for construction, so we had so much dynamite there. So they thought, yeah, might as well use the dynamite to get the maha. तो महाराज बोल रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और हमारे यहाँ उस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा था, डायनामाइट्स यूज करते थे। तो भक्तों ने कहा डायनामाइट का उपयोग करते हैं महाप्रसाद के लिए भी। So the punishment of marriage didn't work. तो शादी की जो सजा दी थी उससे भी काम बना नहीं। But there was one devotee, he wanted to get married, but nobody would marry him. So he decided to get caught stealing maha. That way he could get a wife, you know. तो एक भक्त था, वास्तव में वो शादी करना ही चाहता था, लेकिन उससे कोई शादी कर नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि मैं भी एक काम करता हूँ, चोरी करते हुए मैं भी पकड़ा जाता हूँ, तो मुझे भी जो है मेरी शादी हो जाएगी। So we would catch him, but we wouldn't give him a wife because that's what we knew, that's what he wanted. तो हम उसको पकड़ तो लेते, लेकिन उसकी शादी नहीं करवाते, क्योंकि जाते थे कि ये तो करना ही चाहता है, इसकी नहीं कराएंगे। So he kept stealing maha, so we thought what to do. तो फिर वो तो चोरी करता ही चला गया महाप्रसाद की, तो हमने कहा अब क्या करें इसका। So there was one lady who was living there that nobody would ever consider marrying. तो वहां पे एक स्त्री ऐसी रहती थी जिससे शादी करना कोई भी नहीं चाहेगा। She was persona non grata.
Nobody would consider marrying her. उससे शादी करने का तो कोई सोचेगा ही नहीं। She was always yelling at the brahmacharis. क्योंकि वो हमेशा ब्रह्मचारियों पे चिल्लाती रहती थी। And nobody would go near her because everyone was afraid of her. कोई उसके पास नहीं जाता, सब डरते थे। So we thought, all right, here's the perfect wife for this boy who wants to steal Maha. तो हमने सोचा हाँ ये आदर्श पत्नी है उस भक्त के लिए जो महाप्रसाद चोरी कर रहा है। So they got married. तो उसकी शादी करा दी उसने। I don't know what happened after that. उसके बाद क्या हुआ है मैं नहीं जानता। And about 20 years later, I was preaching in Chicago. 20 साल बाद जब मैं शिकागो में प्रचार कर रहा था, And this lady, who this boy married, she came with her daughter to the Chicago temple, and she met me there. और वो जो स्त्री थी जिसकी शादी करवाई थी वो अपनी पुत्री के साथ शिकागो मंदिर में आई और मुझसे मिली। I hadn't seen her for 20 years, and now she had a grown-up daughter. तो मैं 20 साल से उसको देखा नहीं था, अभी उसकी तो बहुत युवती पुत्री भी है। So I said, "Where's your husband?" तो मैंने पूछा कि आपके पतिदेव कहाँ हैं? He left. बोले वो तो चले गए मुझे छोड़ के। He's gone. One day he just left and never came back. बोले एक दिन वो चले गए छोड़ के और उसके बाद आए ही नहीं। Iskcon. So we have a problem in Iskcon when it comes to marriages. It's such problems. तो इस्कॉन में जब शादी का विचार आता है तो उस समय कुछ समस्याएं आती हैं। Maybe not so much in India, but in the Western countries, my God, it's a problem. हाँ, हो सकता है भारत में इतनी समस्या नहीं है, लेकिन विदेशियों देशों में तो बहुत समस्या है। Many of my disciples are women who can't find husbands, who are married and can't get along with their husband, who are divorced and looking for another husband, and don't want husbands. These are some of my disciples. महाराज बता रहे हैं कि उनके जो शिष्याएं हैं उनमें कुछ शिष्याएं हैं जो एक हैं जो शादी के लिए पति नहीं मिल रहा है, दूसरा जो शादी हो गई लेकिन पति देखभाल नहीं कर रहा है, तीसरा है जिनका तलाक हो गया और फिर शादी करना चाहते हैं, चौथी है जो शादी करना ही नहीं चाहती हैं। So this is a very good brahmachari class. तो ये जो है अच्छी ब्रह्मचारी कक्षा चल रही है। But it's not a very good grihasta class. गृहस्थों के लिए हो सकता है इतना इसमें रुचि न हो। So here, and you also see Dushmanta, he left after some time, but he left a very powerful son in the form of Maharaj, who became the king of the world. तो यहाँ So leaving his wife was one thing, but leaving her with a son was something that he did in order to reward his wife and therefore be able to leave. तो यहाँ राजा दुष्मंत भी जो हैं शकुंतला को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन साथ में एक पुत्र प्रदान करते हैं जो कि है महाराज भरत। तो अगर वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते तो अलग बात है, लेकिन चूंकि पुत्र प्रदान करके गए तो उसको एक बहुत ही अच्छी संपत्ति देके गए। So marriage means really for life, because Krishna consciousness is the principle that allows difficulties to be solved by higher knowledge, because the purpose of marriage is to produce children, to bring those children up and to become God conscious children. So it's a great responsibility for those who are married. तो जो शादी है वो जीवन भर का रिश्ता है और कृष्ण भावनामृत में हमें वो ज्ञान प्राप्त है जिससे यदि समस्याएं आती भी हैं तो हम उनका समाधान कर सकते हैं। तो शादी का जो उद्देश्य है कि कृष्ण भावना भाव संतान उत्पन्न करना, उनको बड़ा करना, तो ये बहुत ही कृष्ण भावनामृत में ये संभव है। Even Bhakti Siddhanta Saraswati said, if I would have entered in Grihastha life,
I would have wanted to produce 100 children so I can make them all devotees. तो जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, उन्होंने कहा कि यदि गृहस्थ आश्रम में मैं प्रवेश करूं तो तभी करूंगा जब मैं ये सुनिश्चित कर पाऊं कि जितनी संतानें हैं वो सब कृष्ण भावना भावित हो पाएंगी. So my point is to take it very serious for those who are married and try to work out any differences, stay together and keep Krishna in the center. We say marriage. In marriage there are 3 people, the husband, the wife and Krishna. तो मेरा मुख्य जो पॉइंट है वो ये है कि शादी एक बहुत ही गंभीर विचार है और एक इसमें जो है जो विवाहित हैं उन्हें जिम्मेदारी को ग्रहण करना चाहिए. यदि कुछ समस्याएं हैं, कुछ आपस में मतभेद हैं तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसको हम दूर कर सकते हैं. And if you live simply, you will have less problems in the marriage relationship. और यदि आप सरल जीवन बिताएंगे तो वैवाहिक जीवन में आपको समस्याएं बहुत ही कम आएंगी. It's when people get too attached to material happiness and material opulence that kind of interferes with the relationship. Because I see women, the men are out there working all day. They have good jobs. They're making a lot of money. They supply the money for the family. But the woman never sees the husband. He's gone all day. Yeah. भौतिक भोग, भौतिक ऐश्वर्य के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाते हैं वैवाहिक जीवन में तो उससे समस्याएं आती हैं. जैसे मैं देखता हूँ कि पति जो है दिन भर बाहर है, पैसा लेके आ रहा है, कमा रहा है, लेकिन कभी स्त्री पति का दर्शन नहीं कर पाती है क्योंकि दिन भर वो बाहर ही लगे हुए हैं. Many stories of men, they just work. तो इस तरह क्या होता है, बस काम 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 चलता रहता है. Money is the honey. Money is the honey. Wherever there's honey, there's bees. और जहाँ पे हनी शहद आएगा वहाँ मधुमक्खियाँ भी आती हैं. फिर There's one story where one young boy, he was 5 years old, and one day he said to his mother, "Who's that man in the house?" एक कहानी है, 5 साल का लड़का अपनी माँ से पूछ रहा है, अरे ये घर में ये आदमी कौन आए हैं? She said, "That's your father." उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं. The boy never saw his father until he was 5. The boy, when he was sleeping, his father was there, and when he was awake, his father was working. Never saw his father till 5. वो ऐसा क्यों पूछता? क्योंकि उसने कोई पिता को देखा ही नहीं. जब पिताजी सो रहे हैं, जब बेटा सो रहा है, तब पिताजी आते हैं काम से, और बेटा उठे उसके पहले ही वो वापस काम पे चले जाते हैं. That's a extreme case. Yeah. So this desire for more and more material gain can also put stress on the relationship. ये एक्सट्रीम केस है, लेकिन जब भौतिक लाभ की अधिक से अधिक जब इच्छा होती है तो उससे भी रिश्तों के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है. I get it all the time. Even today I'm getting it. Women are complaining about the men all the time. तो मुझे ऐसी सूचनाएं बार बार सुनने को मिलती हैं कि स्त्रियां जो हैं पति के बारे में शिकायत कर रही हैं. My name is Candramauli, not Banamali. महाराज कहते हैं कि मेरा नाम तो चंद्रमौली है, वनमाली नहीं है. इनको सुलझाएं. I try to do my best, but it's never good enough. मैं मेरा उनको सुझाव देने का पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन हो सकता है वो संतुष्ट न हो पाते हैं. So there is a procedure, and of course here we find one procedure, and there are different procedures. But the best way to find a marriage partner is to find someone who knows both you and your prospective partner and ask them, what is your opinion of this possible relationship? That is the best way to get what we say expert opinion from people who know both people before their marriage. तो कई तरह की शादी की अलग विधियां हैं, उनमें से कुछ का यहाँ इस श्लोक में एक का वर्णन है. तो वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है जो विवाह में कि हम किसी ऐसे व्यक्ति, कोई दक्ष ऐसा व्यक्ति हो, उसका मार्गदर्शन चुने जो हमें भी जानता है और जिससे हम शादी करने वाले हैं उसको भी जानता है. तो वो हमें सलाह दे सकता है कि क्या
आप लोगों की जोड़ी जमेगी? But the solution to all problems is one: become Krishna conscious. लेकिन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, वो है कृष्ण भक्त, कृष्ण भावना भावित बनना। When you're Krishna conscious, then you might say, well, what does it mean to be Krishna conscious? You might say, what does it mean to be Krishna conscious? जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस समय कृष्ण भावना होने का अर्थ क्या है। Prabhupada was giving a lecture to all of his devotees, and you have to become 100% Krishna conscious. प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन में बोलते हैं आप सभी को 100% कृष्ण भावनावाद बनना है। And the devotees were looking very unhappy, and Prabhupada could see that. He said, all right, 90%. तो ये 100% सुन के तो भक्त लोग डर से गए। प्रभुपाद ने कहा ठीक है 90%। And Prabhupada started to get up from the Vyasasana. He could see the devotees were still shocked. He said, all right, at least 80%. Become 80% Krishna conscious. प्रभुपाद उतर रहे थे व्यासासन से, प्रभुपाद ने कहा भक्त लोग अभी भी थोड़े बुझे हैं, तो बोले ठीक है कम से कम 80% कृष्ण भावना भावित। And that wasn't good enough. So Prabhupada could see, all right. He said 70%, no less, and he walked off. तो देखा अभी भी भक्त लोग उतने खुश नहीं है, तो ठीक है 70% कृष्ण भावना बनना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं होगा, तुरंत चले गए। So that's pretty good, 70%. But if you can go higher, it's even better. तो 70% भी अच्छा है, लेकिन और ज्यादा बन पाए तो और अच्छा है। That means 70% of the time you should be thinking of Krishna, at least. इसका मतलब 70% समय हमें कृष्ण का ही चिंतन करना है, उनकी सेवा में लगना है। And that includes the time you sleep also. और कुछ समय तो हम कई बार सोते भी हैं, हम कुछ समय तो। Okay, so that's the solution to all the problems. Bhakti Siddhanta used to say, there's only one problem in the world: lack of Krishna consciousness. That's all. Solves all problems. तो वास्तव में सारी समस्याओं का समाधान यही है। भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर कहा करते थे, इस संसार में एक ही समस्या है, वो है कृष्ण भावनामृत का अभाव। And what is the best way to become Krishna conscious? और Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सबसे सरल तरीका कृष्ण भावनामृत बनने का है, हरि नाम का कीर्तन करना। There was one senior devotee. He was preaching in one country, and he had many disciples there. And they were coming to him every day with problems, marriage problems mostly, other problems. So every day, 2-3 people would come a day. Maharaj, this is my problem. तो एक वरिष्ठ भक्त थे, एक देश में प्रचार कर रहे थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, तो हर दिन शिष्य उनके पास समस्या लेके आते, शादी की समस्या, ये समस्या, हर दिन 2-3 लोग आते। So he decided, I have to do something. So he decided, every lecture that I give for the next year, I'm only going to speak about chanting the Hare Krishna Mahamantra, no other subject. तो उन्होंने सोचा कुछ इसका समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा अगले साल जितने भी मैं लेक्चर दूंगा, मैं सिर्फ हरिनाम की महिमा ही बताऊंगा, इसके अलावा कोई विषय नहीं लूंगा। And he was giving lectures mostly every day. So for 1 year he spoke only on the holy name. That's all. तो वो तो पूरा साल हर दिन ही प्रवचन देते ही थे, तो एक साल तक बस हरिनाम के बारे में हर दिन बताते रहे। And I know him personally. He told me, he said, Maharaj, after the 1 year, more than 50% of the problems were gone. तो उन्होंने बताया, मैं जानता हूँ व्यक्ति को, उसे बोले महाराज एक साल जब हो गया, उसका 50% लोगों की समस्या पूरी तरह समाधान हो गया। So when you're fighting with your husband or wife, just chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, and you forget about what you're fighting for. तो आपका जब झगड़ा चल रहा हो पति या पत्नी आपस में, तो हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, भूल जाएंगे झगड़ा किस चीज को लेके था। Eneche asari maya nasi badalagi mahari nama maha mantra lao to nimage asauri maha asauri. This is it. This is the solution to all problems. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
And when you're hungry, take prasad. और अभी आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए Bas. बस। But share it with others too. Okay, I don't want to start another subject, so I think we should stop here. Any questions or comments? प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। We lost half the brahmacharis. They're all gone. No questions? Oh, one question here. Okay. Krishna Maharaj. Don't ask me for a wife. Maharaj, my question is like we see like early days Kshatriyas, so they used to marry the girl they like Swayamvar. So but they were not seeing the Kundli thing. So They were not seeing the... Kundli or compatibility according to... Yeah. So will they also does not it affect? Well, yeah. The question is he's asking, in the Kshatriyas they were doing the Swayamvar, but they were not doing the astrological. प्रश्न है कि जो क्षत्रिय लोग हैं वो स्वयंवर करते थे, लेकिन वो कुंडली का तो विचार नहीं करते थे, तो उनके विवाह में कुछ गड़बड़ नहीं होती, समस्या नहीं आती थी। It was natural because in the Kshatriya Dharma, this is how they select their wives. They do it by competition, or they do it simply because they're attracted. Sita was attracted to Ram, Ram was attracted to Sita. And so many examples. But the Kshatriyas simply, when they meet, they know this is my wife, this is my husband. तो ये स्वाभाविक है क्षत्रियों के अंदर कि वे अपना स्वयंवर के द्वारा ही पति पत्नी का चुनाव होता है, और या फिर उनके अंदर एक स्वाभाविक आकर्षण आ जाता है। जैसे सीता राम के प्रति आकर्षित थी, राम सीता के प्रति आकर्षित थे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हम एक दूसरे के लिए हैं। Dushmanta didn't say to Sakuntala, we should have an astrological check first. Dushmanta didn't say to Sakuntala, let's do our astrological charts. No, दुष्मंत ने शकुंतला से ये नहीं कहा कि चलो हम अभी कुंडली मिलाते हैं। No, he was love at first sight. पहली नजर में ही उनका प्रेम हो गया। Of course, that's risky. But for Kshatriyas, it's different. तो क्षत्रियों के लिए इस तरह अलग है। Nowadays, people are not qualified to understand what they need. So that's why we do all these other procedures. Yeah. लेकिन आजकल लोग इतने योग्य नहीं हैं कि वो समझ पाएं कि उनकी आवश्यकता क्या है, इसलिए हमें अलग-अलग विधियों की आवश्यकता पड़ती है। People don't know even how to begin to do whatever they needed to do in life. They don't even know. Can't find a job, can't find a wife, can't sleep at night. So many problems. आजकल लोगों की बहुत समस्याएं हैं, वो जानते ही नहीं कि शुरुआत कैसे करना है, नौकरी कहाँ पे करनी है, कैसे नौकरी ढूंढें, कैसे अपने जो है विवाह कैसे करना है, रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत समस्या है। So they have to read books on how to find a girlfriend or a boyfriend, how to speak in public, there's so many books on energize your mind. It's a new book that's just been released. Stories to excite the mind, And people need so many other things just to make decisions. They can't make decisions anymore. तो लोग आजकल निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं कि कैसे जो है शादी या स्त्री पुरुष कैसे संपर्क स्थापित किया जाए, कैसे मन को नियंत्रित किया जाए, इस तरह की कि वो निर्णय करने की क्षमता आजकल उतनी लोगों के अंदर है ही नहीं। Yeah. So therefore, these are features of Kali Yuga. तो ये जो है विशेष लक्षण है कलियुग के। Not for the people who came from pure Vedic culture. They didn't need astrological charts.
लेकिन शुद्ध वैदिक संस्कृति में इस तरह कोई आवश्यकता नहीं है कुंडली मिलान की। Sometimes it was done, but very rarely. कभी कभी ऐसा किया भी जाता था, लेकिन ये ज्यादातर नहीं होता था। Any other questions? Okay, thank you. Srimad Bhagavatam ki. Yeah. If you're married, stay married. If you're not married, don't get married. Stay where you are. It's safe. It's safe. महाराज बोले जो विवाहित हैं वो अच्छे से विवाह में जीवन बिताएं, जो विवाहित नहीं हैं वो विवाह न करें, जहाँ हैं वहीं पे रहें। You could cut that out of the tape. Don't. Anybody want to get married? Nobody. Okay. Good. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Pati, Krishna Kanya, Krishna. What else? Krishna. What is it? What is it? How do you say wife? Huh? Patni, Krishna Pati, Patni, Krishna Pati, Krishna Patni, Krishna Pati. Krishna Patni and Krishna Pati. Husband and wife, Krishna Father, Krishna Mother, Krishna Dana Pran. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. Krishna Patni, Krishna Pati. I just added that to the story. Girls, they come to me, after years they can't find a husband. I said, just marry Krishna, write him a letter. He'll accept you really quickly, no problem. And one girl, she's doing that and she's happy. Well, Krishna is my husband. She writes letters to me. It's good. But everybody else I tell, they don't listen. They think, Krishna is too far away. I need some kind of physical husband. There's a nice verse in the Srimad Bhagavatam, in the 10th canto, 60th chapter, verse number 45. 10:60:45. It's the story of Rukmini and Krishna, when Krishna tried to make Rukmini angry by saying, you made a mistake by choosing me as a husband. And there's a whole series. Krishna's just, acting like he's not qualified to be her husband. And then Rukmini says something right at the end. Should we read what she says? I mean, he's just teasing her, saying, you should have took, you should have took Shishapal. He was more qualified. You don't even know my background. I just come from, I just herd cows, I don't have any money. It's like, you made a mistake, my dear wife, but it's not too late. And then she's listening to all this, and Krishna's just telling her, I'm not qualified to be your husband. You deserve better than me. And she's listening. Finally, she faints. She can't take it anymore. Krishna wanted to make her angry. He thought she was Satyabhama, because Satyabhama would just get angry and start yelling at Krishna, or chastising Krishna. But Rukmini is soft, so she just fainted. But at the end, she started to counteract all her arguments, and then this verse. Yeah, 10:60:45. Would you put 10:45:60? 10:60:45. Should I read it? You ladies are going to really like this. This is her
a woman who fails to relish the fragrance of the honey of your lotus feet becomes totally befooled, and thus she accepts as her husband or lover a living corpse covered with skin, whiskers, nails, head hair, body hair, filled with flesh, bone, blood, parasites, feces, mucus, bile, and air. Haribol. You can get enthusiastic now. So yeah, she's saying, why accept anybody except you? But if you're married, stay married. Because really, the marriage is meant to bring you closer to Krishna. Everything in life is meant to bring you closer to Krishna. Whatever situation you find yourself is meant to bring you more Krishna conscious. Because Krishna is our only, what we say, focus in life. Because Jiver Subrai, Krishna and Nityadas. We only have one relationship, that's with Krishna. That's all. But when you have a relationship with Krishna, a full relationship with Krishna, you have relationships with everything and everyone. Because everyone and everything is part of Krishna. When you become Krishna conscious, then you actually have love for everyone. Because by loving Krishna, who is in the heart of all living beings, that love carries to all his parts and parcels. So one who actually has love for Krishna has compassion, mercy, and love for all living entities. That's the Vaishnava. That's the conclusion. So whether you're a brahmachari, grihe taka, vane taka, sabda hariboli taka, whatever ashram you're in, stay there and become Krishna conscious. That's all. That's the solution, and that's the goal. जीवन में जो कुछ भी है वो उसका उद्देश्य है कि हमें कैसे कृष्ण भावना भावित बनना है, और जब हम वास्तव में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं तो हम सभी के साथ हमारा संबंध प्रेममय हो जाता है, क्योंकि सभी कृष्ण के ही अंश हैं। तो हम जिस भी स्थिति में हैं उसमें रहें, ग्रहे थाको वने थाको, लेकिन हमें कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करना है। धन्यवाद। Thank you. Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Candramauli Swami Guru Maharaj ki, Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Gaur Bhakta Vrind ki, Gaur Premanand.